इशू ये है कि बहुतों को आजकल कमिटमेंट नहीं चाहिए, शादी चाहिए, कमिटमेंट नहीं Commitment चाहिए। phobia is the biggest challenge for your generation. या टू मच। मेरे कुछ ऐसे, आई नो सम You पीपल। had a breakup recently. I had a breakup actually before Leighton, contrary to popular belief. Yeah. Yeah, and I had to deal with both at the same time. Oh God. Yeah. I feel so bad. No, thanks. Such a sweet bacha you are. I mean, you don't deserve two of these. Yeah, I've self-actualized through, maybe spiritualizing it. Ki it was meant to happen because too much But happened don't you together. have friends I do. and family with whom you can actually bare your soul? I am blessed enough to have that. I actually think honestly, I mean, very honestly, I have a very deep spiritual practice, and that was the anchor for me. That's how I self-actualize. But ये क्या होता है self actualize? मतलब come to terms with internal chatter. तो डिफिकल्ट फेस बट नो कंप्लेंट्स, पॉजिटिव इंसान हूँ। You feel you've grown? हाँ, हाँ। अब आगे मैं बहुत कुछ करूँगा बिकॉज़ यू हैव सो मेनी लर्निंग्स, I also know what not to do in life on many levels. I saw many people moving away. So like now I know that okay, those are the kind of relationships I don't want to invest in. Friendships. But yeah. Yeah, every knock teaches you a few things. Hmm. And that's the learning process. That's the beauty of life. Yeah, yeah. हमेशा पुरानी कहावत है ना, हर दिन सब दिन होत ना एक समान। Hmm. Hmm. तो हर दिन एक जैसा नहीं होता और एवरी चैलेंज टीचेस यू अ फ्यू लेसन्स एंड जिंदगी इसी का नाम है, Yeah. लेसन्स सीखते रहो। Yeah. I mean, it's all for growth at the end of the day. It's not a problem. या कीप ग्रोइंग एंड कीप मूविंग ऑन। थम नहीं जाना चाहिए। Hmm. Hmm. होता है हमारे, मैं एक इंस्टेंस बताऊं मेरे साथ बोलो। जब हुआ। मेरा जब सेकंड बेबी हुआ, 10 years I was told I won't have another baby. I had many complications, and then I figured I was pregnant pretty late. Fourth month almost had begun, and I figured that, and so it felt like क्या हो रहा है, ये तो होना ही नहीं था, and you tell yourself कि it's a miracle. And in the 7th month I developed high blood pressure trauma, and I was rushed to the hospital, and they said बड़ा फिल्मी तरीके से they said that या माँ बच सकती है या बच्चा, because it was very traumatic situation. And in the 7th month I was operated upon, and a premature baby was born. And it's a life altering experience for me because बेबी इज़ बॉर्न, आपका अब बेबी वो डाल देते हैं नियोनेटल आईसीयू में। ही इज़ इन छोटा सा डब्बा सा होता है जिसमें उसको रखते हैं इनक्यूबेटर में, और 2-3 दिन बाद आपको बोलते हैं आप हॉस्पिटल से चले जाओ, बिकॉज आप यू हैव रिकवर्ड and you have to leave the hospital without the baby in your arms, and you don't know the baby's weight was so little um, that लोग मजाक उड़ाते थे। I mean, बाद में हम मजाक उड़ाते थे इस बात का कि हमारे घर में जो चिकन भी आता है ना वो उससे ज़्यादा वेट का आता है, और यहाँ मैंने बेबी मेरा इतना कम वेट का हुआ था। पर 24 days एग्जैक्टली मैं 10-10 घंटे आईसीयू में, through the glass I used to keep talking to my baby, and my husband had kept his name also when I was still in anesthesia. और मैं उससे बात करती थी कि सुचेत, we are a fighter gang, we have to fight back, we can't give up in the middle of this fight, and we have to go home. And the doctors had told me minimum of 2 months रहेगा वो आईसीयू में। 24th day में, touch wood, touch wood, touch wood, his parameters improved, and I kept talking to him. I believe that, I used to pray
I used to talk, I used to keep telling him कि fight करना है, fight करना है, fight करना है. And 24th day, I took him home. And then for 6 months, he could have only 2 ml of milk at a time, which was a dropper. वो पुराने टाइम में, अब तो बड़े ड्रॉपर्स भी फैंसी आ गए. दवाई का ड्रॉपर होता था, उसमें हमें 2 मिलीलीटर दूध उसको एक बार में पिला सकती थी. तो मैं पूरी रात 6 महीने एक कुर्सी पर बैठी, बिल्कुल ऐसे ही सोफा था मेरे कमरे में, इस पे बैठती थी ऐसे बेबी लेके और उसको पिलाती थी. By the time 1 feed was over, every 20 minutes I had to feed him. So I never slept for 6 months. And that was my life changing moment. उसके बाद मुझे ज़िंदगी में किसी चीज़ से डर नहीं लगा, मुझे कोई चैलेंज ही नहीं लगा. चलते रहो, जो आएगा देखी जाएगी. Toughness? It is both. Vulnerability as well as toughness. It's a combo of both. But once you've been through this kind of a challenge with your own child, फिर आपको कोई और प्रॉब्लम ही नहीं लगती है. आपको लगता है कि मदर बनने के बाद आप एक बेहतर प्रोफेशनल भी बन जाते हो? मैं समझती हूँ कि पहले एक वुमन होना एंड द सेंसिटिविटी दैट ब्रिंग्स with itself, and then becoming a mother. It is such a beautiful journey. It is just so beautiful. Teaches you so much. You learn to handle so much. ये एक वो जर्नी है जो आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर कर देती है. एंड मतलब मैं वो इंसान नहीं होती अगर मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया होता. तो प्रोफेशनल क्या, एज अ ह्यूमन बीइंग हर फैसेट ऑफ लाइफ में ये बहुत कुछ सिखा देता है. एंड आई थिंक मुश्किलों का सामना हर किसी को करना पड़ता है. हर किसी को करना इन देयर ओन वेज. एंड every मुश्किल, every crisis teaches you a lesson of life. You've been through one. I mean, everybody has their own Waterloo in their own lives, which can either take them forward in a constructive kind of way, or you can lose everything. I just keep telling anybody I know कि यार fight करो, ये भी निकल जाएगा. जब वो अच्छा वक्त नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, ये भी निकल जाएगा. बढ़ते चलो, लड़ते चलो.